the food delivery riders were also in a way, sort of throwing themselves out because that was the time they could earn more, right? And they are risking their life every day. Workforce में actually women कम हो रही हैं, आपको पता है ये? हाँ, this I That is the heard. contradiction कि आपको लग रहा है कि हाँ, lots of women are coming into, we are asking more questions, we are getting more educated. तो इसके उस पे तो होना चाहिए कि there should be more women. मेरा ये सौभाग्य कह लीजिए कि मैं जिस जगह से आता हूँ, मैंने बहुत छोटे काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करता हूँ इन सब के साथ। कि आप किसी इंसान कोई आता है आपको कुछ देने, आप उसको एक्नॉलेज करते हो, उसकी हस्ती को, उसके वजूद को आप कहते हो कि यार you exist. हम तो वही नहीं कर रहे हैं. Thank you so much for making the time, for joining me on the Quint. Firstly, congratulations. The trailer has been so well received and it really tugs at your heart. But the $1,000,000 question here is, have you all been invited on the Kapil Sharma show to promote the film? Otherwise, promotion तो हो ही नहीं. What do you think? What do you think? इतना तो nepotism हमारा बनता है भाई. And he came as a guest. So it is a show not to be missed. So who was the host? One of my friend, again nepotism. So there's a guy Rajiv Thakur. So we work together in our show, and he's long time friend, college friend. तो आपको कैसा लगा दूसरे साइड होके आपके खुद के शो पे? मुझे कहीं नहीं, मैंने वही हरकत की जो मैं ऐसे होस्ट करता हूँ. बेचैनी हो तो रही ऐसा थी. छिछोरा गेस्ट आपने पहली बार देखा होगा. जब मेरा एपिसोड आएगा तो आपको Yeah, पता जाएगा. सही हाँ, में. हमने बड़ी मस्ती की. मजे है बहुत. एपिसोड शूट Yeah, it was करते fun. हुए. We laughed a lot. Whenever you tell a story, right, it is something that is so relevant. What was it that prompted you to make a story on the plight of delivery executives? I think the COVID, when it happened, the pandemic, and we were, especially during the lockdown, it was such a reality check about where do we situate ourselves in this world. And you realize that there are so many people who literally serve you so that your life can be a little easier and more convenient. And they were witnessing a completely different reality than we were witnessing. We were saying, stay safe, stay home. They had no home. They were not safe. And like the people in hospitals and all of these, the food delivery riders were also in a way, sort of throwing themselves out because that was the time they could earn more, right? And they are risking their life every day because they were more vulnerable, having to go to the restaurants, meet people, etc. So it came from all of that, right? I mean, it is in a way it's a boon to many people that there are these new opportunities that had opened up. But in a traditional workspace, you have your colleagues, you have a boss, there is human interaction. Here you're left alone with just that app. And in a country where people are not so literate or, still grappling with those apps, rules are changing, new things are happening. So I was also curious that how does this technology, what is the kind of mashup that happens with a traditional society and this advent of technology? Now it's a 4-day story. And I realized that just in telling a 4-day story, there is so much else that you can talk about of that context and of these disparities of gender, class, caste, religion that we have normalized, that we have, sort of made them invisible in a way. So, so the film is about this family, but it's also about that context that we've all seen and yet not seen. Kapil, when people look at you, उनको एक ही चीज याद आती है. One is your show, and the films that you've done before has all been comedy. In this trailer, आपने ये serious role भी इतना convincingly ऐसे किया है कि आपको लगता है this will change the way people look at you और जो scripts आपको offer होंगे यहाँ से. जब भी पहला ट्रेलर जब हम आया था, जब हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गए टोरंटो, उस एक क्लिप के कारण ही तो इतना सारा अप्रिसिएशन मिला. और अच्छा, कभी कभी मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग इतना हैरान क्यों होते हैं. मैं भी इंसान हूँ, है ना, मेरे अंदर भी सारे इमोशंस हैं. तो मुझे कल भी किसी ने पूछा कि आपको ये आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था ट्रेलर देख के. मैं कहा शी रियली लाइक द ट्रेलर. तो आपको इतना सीरियस देख के उसको कैसा लगा. मैं कहा यार मैं उसके साथ बड़ा सीरियस हूँ. तो हमारा रिलेशनशिप बहुत सीरियस है. उसने मुझे कभी एंग्री भी देखा होगा, उसने मुझे कभी रोते हुए भी देखा होगा, सारे मूड देखे हैं. तो वो तो अभी बोलती है कि तुझे और बहुत कुछ करना है. सो हाँ, क्योंकि लोगों को जितना दिखता है वो उतने में ही आपको मान लेते हैं. सो ऑल थैंक्स टू नंदिता मैम, इन्होंने मुझे उस नज़र से देखा और मैंने भी दिल से काम किया. इसमें मुझे था कि मुझे करना ही करना है ये. I think we all need that एक person जो हम लोग को एक दूसरे नजरिए से भी देखे. Otherwise you get वो typecast and stereotype playing the same roles. मैं उल्टा मतलब झेल रही हूँ कब से
कि अच्छा आप हंसती भी हैं, मतलब फनी भी हो सकती हैं, आपको एक मतलब जवाब भी देना आता है। जैसे पता नहीं मैं कोई ऐसे बहुत ही, एक तो चश्मा आ गया है जब से तो और ज्यादा वो इमेज को और बर्बाद कर रहा है, लेकिन यू नो वी आर ऑल स्टक विद दोस एक्चुअली लेबल्स। चश्मे का बड़ा हाथ होता है, ऐसे देख के लगता है ये दवाई भी दे देती हैं अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है ना। Shahana, coming to you, in the trailer, Kapil tells you that, you know, अच्छा नहीं लगता कि तुमसे काम करा रहा हूँ. Do you think this line really caught my attention for the simple reason that do you think today we're still living in a society that this divide exists at some level, the role of a woman being that of a nurturer and of a man being that of a provider? Yeah. Do you think it's important that we continue to still say these stories, though there has been a huge evolution as well? Absolutely. I think it's something that, you know, all these ideas, they've existed because of a millennia of it having existed. So the change also takes time. And the more we see things shifting, the more it normalizes it to a new normal, right? And for that, it takes time, and there has to be a sense of empathy and acceptance of that time that it takes. In any field, we see so much more equality in that space. So it's a process, and it's going to become better and better. And I think as society evolves, you know, these things are also shifting. You know, workforce में actually women कम हो रही हैं, आपको पता है ये? हाँ, this I've That is the heard. contradiction कि आपको लग रहा है कि हाँ lots of women are coming into, we are asking more questions, we are getting more educated. तो इसके उस पे तो होना चाहिए कि there should be more women More in the people, workforce. yeah. You know, there was a survey last year that was done that said that only 10% women are present currently in the top 25 entertainment and media industries. There are only 10% women Yeah. at senior roles. So, and we have to Right? listen that. Yeah, yeah. When being a part of this role and essaying the character of a delivery executive, आपने उनके बारे में क्या सीखा, उनकी लाइफ के बारे में क्या सीखा? नंदिता मैम ने जब ये कहानी लिखी तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत रिसर्च की थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो शायद मेरी नॉलेज में नहीं थी। मेरा ये सौभाग्य कह लीजिए कि मैं जिस जगह से आता हूँ, मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करता हूँ इन सब के साथ। और लेकिन जो बड़ी मैं तो एक सिंपल बात बोलता हूँ कि आप टिप देते हो नहीं देते हो वो सब भूल जाओ। आप किसी को घर बुला के पानी पिलाते हो, बिठाते हो, ये तो कभी होगा नहीं, ना ही करते हैं लोग। मैं बोलता हूँ कि आप किसी को थैंक यू बोल देते हो ना किसी काम के लिए, हम लोग ये सोचते हैं अच्छा इसको तो सैलरी मिल रही है ना तो क्या है, तो इतनी अगर इतना सा भी हम लोग कह देंगे तो शायद एक दुनिया और खूबसूरत हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ये कैरेक्टर को निभाते हुए बहुत सारी चीज़ें पता चली है। तो हाँ, मैंने एक किस्सा भी अपने सुनाया था कि हमारे घर में एक डिलीवरी बॉय जब आया तो पहले मैं तो कभी जाता, मैं तो ऑर्डर भी नहीं करता हूँ अपने, मेरे ऐप भी नहीं है कोई, तो मेरी वाइफ ही ऑर्डर करती है। लेकिन पहली बार ये फिल्म शूट कर चुके थे हम, तो एक किस्सा हुआ था, तो कुछ ऐसा हो गया, मिस हैपनिंग, केक पे उल्ट पुल्ट हो गया, तो मैं भाग के गया उसको देखने। ये फिल्म अगर मैंने नहीं की होती शायद मैं इतना एफर्ट नहीं करता कि यार क्या हुआ। तो हाँ, इंसान बदलता है और मैंने बड़ी सारी चीज़ें सीखी एज एन एक्टर भी और कैरेक्टर भी। और बाकी मुझे सवाल आपका भूल गया था वैसे पर आंसर आपने फिर भी दे दिया। What about you? I think just that appreciation of or a realization of what goes in to being able to deliver something at your doorstep for your convenience to make your life easier. I mean, there's gratitude. There's just a sense of gratitude towards everything that happens around you that is making you happier or your life easier or is you know, becoming a convenience for you. Like he said, you could do is have that sense of gratitude. हाँ बिल्कुल। कि आप किसी इंसान कोई आता है आपको कुछ देने, आप उसको एक्नॉलेज करते हो, उसकी हस्ती को, उसके वजूद को आप कहते हो कि यार यू एग्जिस्ट। हम तो वही नहीं कर रहे हैं। These are all hidden in plain sight and yet they are completely like they are so hidden and yet we meet them. We meet our watchmen, we meet, you know, our people who help in the house, people who deliver. और हमें लगता है अच्छा रेटिंग के लिए थोड़ा ऐप के अंदर घुसना पड़ता है, यू नो, कि इतनी मेहनत हम क्यों करें, भाई खाना तो खा लिया है, अभी वो होगा क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा। पर इस फिल्म के बाद आपको लगेगा यार मेरे इतने से छोटे काम, मेरा 30 सेकंड्स या 20 सेकंड की वजह से किसी को इतना फायदा होने वाला है, किसी के घर में चूल्हा और थोड़ा सा जल सकता है। और ये मैंने देखा था that लोग हमेशा जब डिलीवर करने आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऑर्डर करती हूँ, वो हमेशा मतलब अच्छी रेटिंग देना मैम। एंड मुझे बाद में समझ में आया कि इतना क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब उसका जो रेपरकशंस, ऑल द
you know, the domino effect of that, वो मुझे पता ही नहीं था इतना. When it came to casting for the film, what made you think of Kapil for this role? I hadn't seen him, and I've said this story many times. I don't have a television for last 7 years, and I had never really seen his show. Of course, I knew he was this very popular comedy host show. तो लगा popular तो आजकल मतलब मुझे लगता था थोड़ा सा मेरा ऐसा स्नूटी वाला भी मामला था कि अच्छा you know जो चीज़ popular है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी भी हो. You know, that kind of a thing. So I didn't think about it much, and then while I was surfing, suddenly there was a little clip of him and Karan Johar, you know, hosting an award function, and he was so natural, and he was laughing also, and he was asking seriously also, and I knew he was performing. It was so believable. He was making jokes about being a common person, and I knew he was no more a common person. So he was already a good performer in that. तो मैंने ऐसे ही अपने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला मुझे कपिल शर्मा का नंबर ज़रा ढूंढ के लाना. ही इमीडिएटली कॉल मी, सेज व्हाट, नहीं मैडम वो आपको पता नहीं है, उनको सबको पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है. तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, वो ऐसे कॉमेडी हो शो है, वो नहीं ऐसे रोल में कर सकते. और उसको ऑलमोस्ट लगा कि यार ये मतलब ये कैसे हो सकता है. देन आई प्रपोज्ड इट टू माई प्रोड्यूसर्स. दे वर ऑल्सो इनिशियली हेजिटेंट कि are you sure? मतलब isn't it a bit of a risk? I mean, we don't know whether he can act or not. I then found the number. I messaged him. He promptly also responded, and I said, okay, मिलते हैं. And then we just met, and I think we just connected. हाँ. कि आपको पता भी है मैं कितना बड़ा स्टार हूँ. Because he used to think ये मुझे डांट रही है, ये ऐसे कर रही है मुझे, ये करो टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो. मतलब she doesn't realize मैं हूँ कौन. ऐसा कभी नहीं मैंने किया. एक बार कहा था मुझे. अरे ये एक बार कहा था कॉल टाइम देती रही मुझे. वो उस आदमी को जो 3 बजे सोने जाता था, अब उसको 3 बजे उठना पड़ रहा है. फिर मैं थोड़ा जिम भी जाता था, मैं थोड़ा फ्रेश दिखना चाहिए. तो हाँ, पर मेरी काफी चीजें चेंज कर दी इन्होंने. Thank you. Thank you so much and Thank good you. luck for the film. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you.